Hi friends, IBPS PO Prelims, the big exam is here. You're prepared for it, but still feeling a little unsure, a little tentative, thoda sa dar, a little fearful, some nervousness, and you're a little disturbed all because of this. It's okay, it is normal, it's perfectly natural to experience something like this before a big exam like this. This is a huge exam, you understand that, so it's alright, it's fine. Relax, chill maro, kuch nahi hoga, everything would be good. I'm not here to teach you anything today. There's nothing to teach at this stage, but I'll just tell you two things, two small crisp bullet points. छोटी सी बात आपसे करूँगा and this should hold you in good stead. आपका ध्यान रखेंगे दो छोटी छोटी बातें, इनको दिमाग में रखिएगा. First thing is रुकना नहीं है. Don't have to stop. You cannot stop. What is the meaning? It's a prelims exam and it's a speed test. So it's 20 minutes each. And you have to do a lot of questions these 60 minutes, 100 questions, 60 minutes. You expect to do 70, 80, 90, something like that, right? You cannot stop anywhere, fine. So why does it mostly happen? When if I look at the past failures of good students, jinki tayari thi fir bhi they could not make it. Most of the times it was because they got stuck somewhere. It can be anything. So it can be a puzzle, it can be a DI set, it can be something as innocuous as a number series question. It can be like that, fine. Why does it happen? Mostly because of our preconceived notions, right? So for example, if I believe that I'm good at DI, not so good at arithmetic questions, like so I think like that. What would I try and do first? Because of my experience with test series and everything, because of my strategy, I believe I'll do DI first. It's perfectly fine. You can have a strategy like that, right? Because I'm good at DI. Now what happens is this time in DI there are two speed breakers. In the first set, 3 questions easy, there are 2 questions that are not doable, have calculations. I look at them, I try doing them because I want to so desperately get 15 out of 15 in DI, which is my strong zone, that I just cannot have this thought, I cannot bear it, that I will not be doing these 2 questions or I can leave anything from these 15 questions. It happens, you've experienced this. The same thing can happen with puzzles. I'm good at puzzles. This is my scoring zone. Reasoning is the section. I get 30 out of 35 mostly in the prelims test, right? You think like that, you bump into a puzzle that looks a little ugly, fine, but you believe you'll crack it. Get started. A couple of minutes over. You think another 1 minute I'll do it because I do most of the puzzles, right? So ho hi jayegi, aisa kaise nahi hogi. Another 1 minute, not able to do it. Start to feel the pressure, but still cannot leave it. You waste 5, 7, 8 minutes on it, fine. You don't do it, or even if you do it, you spoiled the paper already because now the clock is ticking, right? It happens. Number series, very simple questions, 5 questions. If they come 1.5, 2 minutes, like that. Now there is one tricky one in that, wrong number series, a tough one. When you try to do it 10, 15, 20, 25 seconds, 1-2 minute kharab ho gaye, ekdam se laga, oh, what have I done? It happens like this. It can happen in English, it can happen in reasoning, it can happen in quant, it can happen absolutely anywhere, but mostly in reasoning and quant, in puzzles, in DI sets, stuff like that, fine. So with these preconceived notions, these are preconceived notions. No, one thing is having a strategy, but keep it flexible, right? So that works best. But if you have notions like this, I'll get 5 out of 5 here, 10 out of 10 here, is fine. Keep this in mind, fine. But be flexible enough. That strength of yours should not become a weakness. जबकि मजबूती होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, वो आपकी कमजोरी ना बन जाए because of this. आप समझ रहे हैं बात को? Just keep this in mind. Don't stop anywhere. Whatever strategy you have, I would not want to change that at this stage. No, there's not enough time left. I'm just saying one thing. Make an additional layer. Just keep an additional layer of don't stop over it. This is your strategy. Just keep an additional layer, a thin layer. Don't stop. Just keep it at the back of your mind all the time. So the moment it's like 20, 25 seconds, 30 seconds in a question, don't stop. Move. It'll feel like it's a waste of time. 25 seconds barbad ho gaye. Now how can I leave it? I have to crack it. No, there are enough questions in the paper to be capitalized upon. There's enough stuff in the paper to do, and that will be enough. That will be enough to see you through. You will crack the exam just doing those questions. You get the point? So it's not important. It'll keep pulling you towards it, but don't go back. Keep moving, don't stop. Rukna nahi hai, badhte rehna hai. So this was step number 1. This is really important. Just keep this in mind, and you will do better than what you would have done otherwise. Number 2. डरना नहीं है. Don't be scared. Don't be scared of anything. Have no fear. Don't fear anything. क्या हो जाएगा यार? What are you afraid of?
प्रीलिम्स में एग्जाम तो मुश्किल होता नहीं है. व्हाट इज़ द फेयर? फेयर इज़ व्हाट इफ़ आई डोंट मेक इट. अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? पूरा साल खराब हो जाएगा. नहीं, SBIPO है ना इसके बाद में. थिंक लाइक दैट. When I'm not saying don't take it, this is very important, not take it casually, but it's not the end of the world. And the moment you start feeling like that, you feel better immediately. क्या हो जाएगा यार? What would happen? एग्जाम ही तो नहीं निकलेगा तो क्या होगा? Would my career end? करियर खत्म हो जाएगा? No. What would happen? Nothing much. थोड़ा बुरा लगेगा. It's okay. I'll again start working for SBIPO. ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा. एंड यू वुड इमीडिएटली फील बेटर बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट अनडाउटेडली. बट दुनिया खत्म हो रही है क्या? नहीं हो रही. तो क्या हो जाएगा? यू विल फील बेटर. 2, अपने आप से पूछो, जस्ट आस्क योर सेल्फ, वाई वुड आई नॉट क्रैक इट? पढ़ा नहीं है. देखो पढ़ा नहीं है तो फिर तो आप मुकद्दर के सिकंदर हो, वैसे भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. बट इफ़ यू हैव स्टडीड, पढ़ा है, मेहनत करी है, अच्छे से करा है, वॉट आर यू स्केयर्ड ऑफ? मीन किस लिए? अरे ये तो ऐसा है जैसे इंडिया वर्ल्ड कप में आयरलैंड या नमीबिया से खेल रहा है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है. इट्स अ नेचुरल फीलिंग. थोड़ा सा नर्वस है, इम्पॉर्टेंट मैच है, बड़ा मैच है, अच्छी टीम है, राइट. बट इट्स अ स्मॉल टीम लाइक दिस. सो प्रीलिम्स इज लाइक अ स्मॉल टीम. यू शुड बी वेरी ऑफ इट. हरा सकता है वो आपको, प्रीलिम्स भी आपको हरा सकता है, बाहर जा सकते हो. बट जनरली ऐसा होगा क्या? नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ऐसा होगा क्या? वुड इट हैपन नॉर्मली दैट नामीबिया वुड बीट इंडिया, अफगानिस्तान? वुड इट हैपन? नो, नॉट नॉर्मली. इट कैन बी एबरेशन. एक ख़राब दिन ऐसा हो सकता है. बट यार ख़राब दिन कितने ही होते हैं, रोज़ रोज़ थोड़ा होता है. हो सकता है. सो आई विल टेक केयर ऑफ इट. आई विल बी केयरफुल. आई विल मेक नो सच मिस्टेक. आई विल नॉट टेक इट कैजुअली. अच्छे से करूँगा, ध्यान लगा के करूँगा, मन से करूँगा. बट डर नहीं. सो अफगानिस्तान के अगेंस्ट जैसा खेलेगा ना इंडिया, जीत तो जाना ही है, बट फिर भी अच्छे से खेलूँगा. क्या पता राशिद खान आज कुछ कमाल कर दे, क्या पता कोई पजल आज कुछ कमाल कर दे, ख़राब कर दे. नहीं, जस्ट लाइक दैट. जस्ट हैव अ फीलिंग लाइक इट विल फील बेटर. कंट्रोल में है मेरे, पढ़ा है मैंने. अरे यार आई वर्क सो हार्ड फॉर इट. वाई वुड आई नॉट गेट शॉर्टलिस्टेड इन दिस? इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं यार. इफ़ आई थिंक आई एम एलिजिबल टू क्रैक द मेन एग्जाम, टू क्रैक द इंटरव्यू, टू बी अमंग दोज फ्यू थाउजेंड स्टूडेंट्स हु वुड फाइनली मेक द कट, इस एग्जाम में कैसे रह सकता हूँ मैं? हाउ वुड आई फ्लंक इन दिस एग्जाम? नो, आई कैन नॉट. राइट, आई कैन नॉट. नाउ व्हेन यू कैन नॉट, डर किस चीज़ का है यार? कोई नहीं. ठीक है, थॉट प्रोसेस समझ में है. व्हाट इज इट लाइक? ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं निकलेगा. तैयारी करिए, आता है, आसान एग्जाम में होगा ही होगा. अगर रह गया फिर भी तो क्या हो जाएगा? क्या दुनिया बदल जाएगी? कुछ नहीं. आई हैव अनदर एग्जाम एंड यू विल फील बेटर अबाउट दिस. थोड़ा सा इसको अपने दिमाग में डालो इस चीज़ को. कुछ नहीं बिगड़ने वाला. आई विल टेक इट सीरियसली. आई विल क्रैक इट. नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ और देख लेंगे. दुनिया थोड़ा ना खत्म हो रही है. व्हाट वुड चेंज? योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, वुड दे अबैंडन यू? वुड दे स्टॉप लविंग यू? वुड द पेरेंट्स स्टॉप गिविंग मनी? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. थोड़ा बहुत चलता है, आपको भी दुख होगा, उनको भी होगा. दैट्स फाइन. दैट्स समथिंग दैट यू कैन टेक इन अ स्ट्राइड. बट नथिंग वुड चेंज. दुनिया कुछ नहीं बदलेगी, आपका करियर कुछ नहीं बदलेगा. मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं हो ही जाना है. तो इससे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. इट्स एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम. आई विल गिव इट द ड्यू रिस्पेक्ट. जितना इसको इज्जत देनी चाहिए मैं दूंगा, बट वह उतनी ही. ये मेरे को डरा नहीं सकता. दिस एग्जाम कैन नॉट स्केयर मी. राइट, हैव अ फीलिंग लाइक दैट. Be brave, be courageous, have no fear, remain confident, believe in your ability, your preparation. इतनी मेहनत करिए, बेकार थोड़ा ना जाएगी. कैसे जाएगी? जा ही नहीं सकती. जाने नहीं देनी, करना ही है. राइट, think like that and you will feel better. It's important that on the day of the exam you feel better, you feel good, really good about yourself, about achievements, about your preparedness, about yourself as a person. इस बार करना ही है यार, काम खत्म करना है, एग्ज़ाम डन करना है. राइट, फील गुड. अच्छा फील करो, हो जाएगा एग्जाम. छोटा सा हर्डल है. आई विल स्वीप इट असाइड क्विकली, ईजिली, एंड विल स्टार्ट वर्किंग फॉर द मेन एग्जाम. हो जाएगा ईजिली. यही मानना है. बी ब्रेव, बी करेजियस, बी कॉन्फिडेंट, बिलीव इन योर एबिलिटी, योर प्रिपरेशन, हैव दैट कन्विक्शन दैट यू कैन डू इट. Go to the examination hall with this kind of a feeling and the victory will be yours. Go, kill the exam. Good luck.